Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the equation of a plane which is perpendicular to a given direction and at a given distance from the origin in vector form, in normal form, in Cartesian form, that is general form of the Cartesian form, and standard form of the vector equation. And these four equations for that plane we have deduced in the previous class, and we have also discussed about the attitude numbers of the plane. What are attitude numbers of the plane? And we have discussed about the facts about parallel and perpendicular planes. Now the next topic in our content, and that is plane passing through a given point and perpendicular to a given direction. उस plane की क्या equation रहेगी जो plane एक point में से pass हो रहा है और एक वेक्टर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो उस समय जब दे रखा है कि ए प्लेन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए गिवन पॉइंट, एंड अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन एट दैट टाइम व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन Cartesian form. Since that plane is passing through a point, that's why this is also known as one point form of equation of plane. This can be also regarded as known as one point form of equation of a plane. So let us consider a plane. हम यहाँ पे एक plane को consider कर रहे हैं like this, and let this plane is named as pi. Suppose इस plane का नाम pi है और ये pass हो रहा है through a point, and let that point be denoted by point A. This point A must has its position vector when we talk about the vector equation. And suppose that position vector, given position vector is small a vector, and let a perpendicular is drawn onto the plane, and let that perpendicular be denoted by vector n. So vector n is a perpendicular, is that sort of vector which is perpendicular to the plane, and that plane is passing through a point A with a disposition vector as small a. चूंकि स्मॉल ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लेन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो सपोज हम यहाँ पे ओरिजिन को कंसिडर करेंगे. दिस इज आवर ओरिजिन ओ. तो ओरिजिन से इस ए पे जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा यानी ओ ए, यही रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए वेक्टर को, बिकॉज स्मॉल ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड दैट इज वी हैव टेकन इट एज स्मॉल ए वेक्टर. सो ओ ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर. तो यहां पे मेंशन कर देंगे, लेट अस कंसिडर ए प्लेन पाई. लेट अस कंसिडर ए प्लेन पाई passing through a point. Let us consider a plane pi passing through a point. कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? A with its position vector, with its position vector as small a vector, and is perpendicular to the vector that is n vector, right? Since that plane is passing through a single point, through a point, that's why this can be regarded as one point form of equation of plane. So let us consider plane pi. हमने एक plane pi को consider किया है. That plane pi passes through the point A, given point A. That given point A must has the given position vector, and let that position vector be small a vector, and let n vector be a vector which is perpendicular to the plane, right? So we are taking an unknown point P. हम एक point P को consider करेंगे, और suppose उस point P का position vector small a vector है. तो जब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a वेक्टर है, इसका मतलब अगर हम O से P तक एक डायरेक्टेड लाइन से सेगमेंट डिमार्केट करेंगे, ये OP वेक्टर स्मॉल r वेक्टर के बराबर आएगा, राइट? बिकॉज OP वेक्टर इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, एंड दैट्स वी हैव टेकन दैट स्मॉल r वेक्टर. सो यहां पे लिख लेंगे, लेट P विथ पोजीशन वेक्टर, लेट P विथ पोजीशन वेक्टर small r vector be a point, be any point. Suppose ये कोई भी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है. तो जब ये कोई भी पॉइंट है,
तो अब हम कंसिडर करेंगे कि ये पॉइंट पी जो है ये प्लेन में लाई कर रहा है। तो प्लेन में लाई कब करेगा? अगर हम एपी को ज्वाइन कर लेंगे और ये एपी वेक्टर जो है, ये एपी वेक्टर और ये एन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, means n vector is perpendicular to every line or every vector in the plane, right? Because a line, a vector is said to be perpendicular to the plane. एक line या एक vector एक plane पे तभी perpendicular होता है जब वो लाइन इस प्लेन में जितने भी सारे वेक्टर्स या प्लेन में जितनी भी सारी लाइन्स लाई कर रही हैं, ये वेक्टर उन सारी लाइन्स पे परपेंडिकुलर होगा। Obviously, because it is perpendicular to the whole plane. When it is perpendicular to the whole plane, it is perpendicular to every line in the plane, right? So at that time, AP vector and N vector must be perpendicular to each other when P lies in the plane. So let P with position vector small r be any point, then P lies in the plane. Then P lies in the plane pi if and only if, yes, AP vector is perpendicular to N vector. If and only if AP vector is perpendicular to N vector. Because N vector is perpendicular to the plane, means every line or every vector in the plane is perpendicular to N vector, right? So implies this can be written as, that is if and only if, yes, AP vector is a non-zero vector, N vector is again a non-zero vector, and two non-zero vectors are perpendicular to each other. When two non-zero vectors are perpendicular to each other, obviously their dot product must be equal to 0. So that's if and only if AP vector dot N vector is equal to 0. Because if V1 is perpendicular to V2, then V1 dot V2 must be equal to 0. When two non-zero vectors are perpendicular to each other, then obviously their dot product is a zero scalar, right? So we are keeping this equation as equation number first. Now from figure we have, अगर इस ट्रायंगल को हम देखेंगे OAP, look at this triangle. इस ट्रायंगल में क्या होगा? OA vector and AP vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order. Then their sum must be represented by third vector, that is OP vector. So OA vector plus AP vector must be equal to OP vector because by triangle law. So now from figure we have, yes, what we have from the figure? OA vector plus AP vector must be equal to OP vector because by triangle law, right? Implies यहां से निकालेंगे वैल्यू ऑफ AP वेक्टर एंड दैट्स इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, which further implies that, so AP वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा? Yes, that's equal to OP vector. OP vector is actually the position vector of point P, and that's small r vector. So small r vector minus OA vector. OA vector is the position vector of point A, so that can be represented by small a vector. So means we have got the value of AP vector. Now put the value of AP vector in equation first. We get, so from equation first we have, therefore from equation first we have, yes, what we have from the first? AP vector dot N vector is equal to 0. AP का अपना value, that's R vector. So R vector minus A vector dot, yes, N vector dot N vector is equal to 0. So we have got the result, R vector minus A vector dot N vector is equal to 0. Keep that equation as equation number second, and that equation number second will represent the required equation of that plane which is passing through a point and perpendicular to a given vector. In what form? In vector form. This is the required equation of the plane in vector form. This is the required equation of plane
required equation of plane in vector form. This is the required equation of the said plane in वेक्टर फॉर्म. तो क्या होगी उस प्लेन की वेक्टर फॉर्म जो एक पॉइंट में से पास हो रहा है और जिसपे एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता है. क्या होती है उसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, where r vector is the position vector of any point in the plane. A vector is the position vector of given point through which the plane passes, and n vector is that vector which is perpendicular to the plane, which is normal to the plane. Right? So एक plane जो एक point में से पास हो रहा है और एक परपेंडिकुलर एक वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, तब इस प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी? आर वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ए वेक्टर एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है, दैट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट through which the line passes, and n vector is that vector which is perpendicular to the plane. Right? So that is actually the equation of plane in vector form. Now we are going to deduce the same equation in Cartesian form. अब इस plane की Cartesian equation क्या रहेगी? So when we are talking about the Cartesian equation, we must deal with the coordinates, not with the position vectors. Vector form में हम position vector से deal करते हैं, लेकिन Cartesian form में हम position vector से नहीं बल्कि coordinates of the point से deal करेंगे. तो आपके पास एक given point है A, तो इसके given coordinates होंगे suppose x1, y1, z1. आपके पास unknown point है P, तो इसके unknown coordinates होंगे let that be x, y, z. राइट? और आपके पास एक वेक्टर है n वेक्टर, इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे, और जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे. मींस इसके डायरेक्शन रेशियोज सपोज हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ ए बी सी. लेट ए बी सी बी द direction ratios of vector n. We have taken them as capital A, capital B, capital C because the direction ratios of any perpendicular to the plane, the direction ratios of any normal to the plane are known as attitude numbers of the plane. So here A, B and C are the attitude numbers of this plane pi. That's why we have taken them as capital A, capital B and capital C. In case of a line, there we have the direction ratios as small a, small b and small c. But in case of a plane, the attitude numbers of a plane are denoted by the capital letters capital A, capital B and capital C. So we are going to deduce the Cartesian equation of the same plane. So here lies the Cartesian equation. तो Cartesian equation में हमने क्या किया कि given vector जो है उसके direction ratios हमने लिए ordered three tuple of A, B, C. So let ordered three tuple of A, B, C be the direction ratios. Ordered three tuple of A, B, C be the direction ratios of the vector n. Be the direction ratios of the vector n, and let points A and P be, and let points A and P be A of x1, y1, z1. क्योंकि एक गिवन पॉइंट है इसलिए इसके गिवन कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसीलिए डिनोट किया है x1, y1, z1 से. एंड पॉइंट P एक अननोन पॉइंट है, इसके अननोन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड लेट दैट बी x, y, z डिनोटेड बाय द वेरिएबल्स x, y, z. Therefore, here we are going to calculate first small r vector. What is small r vector? Small r vector is the position vector of point P. Point P has the coordinates x, y, z. What would be the position vector? xi plus yj plus zk. So this is xi plus yj plus zk. Similarly, we are going to compute small a vector. What is small a vector? Small a vector is the position vector of point A, but the coordinates of point A are x1, y1, z1. What would be the position vector? x1i plus y1j plus z1k, right? And in the similar fashion, we are going to calculate n vector. N vector has the direction ratios ABC.
मीन्स n वेक्टर हैज द स्केलर कंपोनेंट्स abc। अगर n वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन रेशियो abc हैं तो वेक्टर क्या बनेगा, ai प्लस bj प्लस ck, राइट। So R vector is xi plus yj plus zk, A vector is x1i plus y1j plus z1k, and n vector is ai plus bj plus ck. Now we are going to substitute the value of R vector, A vector and n vector in equation second. Substituting the values of R vector, A vector and n vector in equation second. In equation second we get, yes, what we get? R vector minus A vector. Put the value of R vector, that's xi. So xi plus yj plus zk minus times A vector. Put the value of A vector, that's x1i. So x1i plus y1j प्लस z1k, राइट। और इसको होल डॉट करना है किसके साथ, n वेक्टर के साथ। तो डॉट n वेक्टर का अपना वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ai। सो ai प्लस bj प्लस ck एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। First we have to compute this thing which is within the braces, square braces, so implies this can be written as, yes, दिस इज xi माइनस x1i, i और i को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस x1 इंटू i। सो x माइनस x1 इंटू i प्लस yj माइनस y1j, सो y माइनस y1 इंटू j प्लस zk माइनस z1k, सो प्लस z माइनस z1 इंटू k। अब यहां से जो वेक्टर आएगा इस वेक्टर का डॉट करना है ai प्लस bj प्लस ck is equal to 0, right? This can be further written as, yes, this further implies that now you have a vector which is expressed in terms of components and another vector again expressed in terms of components, and you need to find their dot product. The dot product of two vectors when they are expressed in terms of their components किसके बराबर होता है, sum of products of their corresponding, yes, scalar components। यानी पहले स्केलर कंपोनेंट को पहले स्केलर के साथ मल्टीपल स्केलर कंपोनेंट के साथ मल्टीपल प्लस, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीपल प्लस, तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीपल। सो दैट इज x माइनस x1 इंटू a, क्या आएगा, a इंटू x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इंटू b, सो b इंटू y माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इंटू c, सो c इंटू z minus z1 and that's equal to 0. So a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 must be the required equation of the plane in Cartesian form. तो r vector minus a vector dot n vector is equal to 0 इस प्लेन की, yes, वेक्टर फॉर्म है, और a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। ये इस प्लेन की रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, required Cartesian equation of the plane. So r vector minus a vector dot n vector is equal to 0 is the vector equation of a plane in one point form, and a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 is the Cartesian equation of the plane in one point form. So both are equations of a plane in one point form, means equation of a plane passing through a given point and perpendicular to a given vector. तो ये उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है और ये इस प्लेन की
कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे पास a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 है, while this a, b and c, they are the attitude numbers of the plane, or we can say that the direction ratios of normal to the plane. X, y and z are the coordinates of any point lying in the plane, and x1, y1, z1 are the coordinates of the given point through which the plane passes. So this was all about the equation of plane in vector form as well as in Cartesian form of that plane which is passing through a point and perpendicular to a given vector, right? Now we are on the next concept, and that's again very much important. That's 3-point form of equation of a plane. हमें अब उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए which contains 3 given points or which passes through 3 given points. एक ऐसा प्लेन जो 3 given points में से पास हो रहा है, अब उस 3 given points में जो प्लेन पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, right? So we are here dealing with that thing. तो सपोज हम पहले कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी 1 पॉइंट फॉर्म। फिर उस 1 पॉइंट फॉर्म में और 2 पॉइंट सबस्टिट्यूट कर लेंगे। तो जब वो और दो पॉइंट्स उसमें सबस्टिट्यूट कर लेंगे, वहां से हम इक्वेशन लेके चलेंगे। क्योंकि पहले हमने लिया था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, फिर और 2 पॉइंट्स इसमें सबस्टिट्यूट कर दिए, तो कितने पॉइंट्स बन गए? 3 पॉइंट्स, और मिलेगी हमें इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स और विच कंटेन्स 3 गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम यहां पे मेंशन कर देंगे एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, जो अभी कैलकुलेट किया है कार्टेशियन फॉर्म में, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। तो सबसे पहले यहां पे मेंशन कर देंगे एनी प्लेन passing through the point, any plane passing through the point, yes, कौन सा पॉइंट? a of x1, या a मेंशन करना जरूरी नहीं है, x1, y1, z1 is, that is equation of a plane in 1 point form। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है? yes, a into, अभी पढ़ी है, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. We are keeping this equation as equation number first. So this would be the equation of that plane which is passing through the point x1, y1, z1. a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. Where again a, b and c are the direction ratios of normal to the plane, perpendicular to the plane, or we can say that they are the attitude numbers of the plane. X, y, z are the coordinates of any point lying in the plane, and x1, y1, z1 are the coordinates of given point through which the plane passes, right? तो ये है उस प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट में से पास हो रहा है। अब अगर इस प्लेन पे एक और पॉइंट लाई करेगा, सपोज उसका नाम है x2, y2, z2, तो दैट मीन्स वो x2, y2, z2 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब x के बदले x2, y के बदले y2 और z के बदले z2, बिकॉज जब सेटिस्फाई करेगा तो वेरिएबल्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय x2, y2, z2। सिमिलरली एक और पॉइंट x3, y3, z3 इस प्लेन में लाई करेगा, अगर वो पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? सो हम यहां पे मेंशन कर देंगे नाउ द पॉइंट्स x2, y2, z2 and x3, y3, z3 lie in plane first। ये प्लेन फर्स्ट में लाई तो करेंगे, लेकिन कब? इफ एंड ओनली इफ ये पॉइंट x2, y2, z2 इस प्लेन फर्स्ट में लाई करेगा, ये पूरा प्लेन जो फर्स्ट है इसमें लाई करेगा कब? जब ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वेरिएबल जो है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय x वुड बी रिप्लेस्ड बाय x2, y would be replaced by y2 and z would be replaced by z2। so that is if and only if। तो क्या बनेगी इक्वेशन? a into yes x2 minus x1 plus b into y2 minus y1 plus c into
z2 minus z1 is equal to 0. We are keeping that equation as equation number second, right? Now एक और पॉइंट x3 y3 z3 इस प्लेन फर्स्ट में लाई तब करेगा जब ये इस प्लेन फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब फिर से x के बदले वेरिएबल x वुड बी रिप्लेस्ड बाय x3, वेरिएबल y वुड बी रिप्लेस्ड बाय y3 एंड वेरिएबल z वुड बी रिप्लेस्ड बाय z3। एंड तो उस समय इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू x वुड बी रिप्लेस्ड बाय x3, सो x3 माइनस x1 प्लस b इंटू y3 minus y1 plus c into z3 minus z1 and that's equal to 0. We are keeping that equation as equation number third. Now अगर equation first, equation second और equation third को देखेंगे, here we have the system of three equations and the system of three equations can be solved by determinant method. So by determinant method we can evaluate a b c from all the three equations. कैसे? क्योंकि हम इस सिस्टम को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। यहाँ पे b के बदले 0 0 और 0 है, तो हम ax is equal to o लिख लेंगे because this is a homogeneous system. All the constant terms here are 0 0 0 and 0, so that's a homogeneous system. So this system can be written as ax is equal to o by the concept of determinants. ये हमने determinants में पढ़ रखा है. Now a matrix would be equal to a b c a b c a b c, right? And x matrix would be equal to x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. ax is equal to o, that is as null matrix, zero matrix. तो फिर क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स. अगर वो एग्जिस्ट हो रहा है तो a इनवर्स से जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू o. नाउ यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो a इनवर्स इंटू a बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स. तो यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 and that's equal to 0. Now taking determinant on both sides, तो implies क्या बनेगा, determinant of x matrix is equal to determinant of zero matrix always yields 0, right? ये यहाँ पे जिगर ये ix is equal to ये 0 नहीं है, ये o है, यहाँ पे भी ये o है, लेकिन जब determinant ले लेंगे तो ये 0 बनेगा because determinant of zero matrix is always 0. तो यहां पे क्या फिर क्या बचेगा, eliminating a b and c, eliminating a b and c from equations first, second and third by determinant method. Eliminating a b and c from equations first, second and third by determinant method. तो क्या मिलेगा, determinant of x, that is determinant of, we get determinant of x का वैल्यू x minus x1, so x minus x1 y minus y1 z minus z1, yes, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, similarly x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 and that's equal to 0. So determinant of x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 is equal to 0. This is a determinant of square matrix of order 3 by 3. Evaluate the determinant by the method of Laplace expansion. You will get an equation in terms of x, y and z and उसको 0 के बराबर ले लो तो एक equation मिलेगी in terms of x, y and z and that equation would be nothing but the equation of a plane containing 3 given points or equation of a plane passing through 3 given points, right? तो अगर एक plane 3 पॉइंट्स में से पास हो रहा है, एक है 1 2 3, दूसरा है सपोज 3 4 6 और तीसरा है सपोज 6 9 1,
अगर ये आपके पास 3 पॉइंट्स है A, B and C और it is given that a plane is passing through the point A, B and C and you have to find its equation, तो डायरेक्टली आप ले लोगे डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस, इस समय x1 y1 z1 है, ये जिगर x2 y2 z2 है और ये x3 y3 z3 है. Put the value of x1 y1 z1 from here. Put the value of x2 y2 z2 from here. Put the value of x3 y3 z3 from here. Expand the determinant by Laplace expansion. There you will get the equation in terms of x, y and z, and that equation would be the required equation of that plane in that is in 3-point form, right? So that was all about the 3-point form of equation of a plane.